नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया संकल्प में। तो आज बात भारत की विदेश नीति की, आज बात G20 समिट की और आज बात विकसित और विकासशील देशों की। We at ED National today focus on the takeaways of the G20 summit held recently in Argentina. We're also proud of the fact that India will host the summit in 2022, which happens to be the 75th year of our independence. Let's listen in to what our Honorable Prime Minister had to say. ने इटली से रिक्वेस्ट की थी कि अगर 21 के बजाय 22 अगर भारत को मिलता है, और मैं इटली का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और इस प्रस्ताव को जब आपने सबके सामने रखा तो सबने भी इसको स्वीकार किया, इसलिए मैं बहुत आभारी हूं। और 2022 जबकि भारत की आज़ादी के 75 साल होंगे, एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। उस समय विश्व के सभी लीडरशिप भारत आए। Prime Minister Narendra Modi leading the country in creating history. Italy, the designated host for G20 meet in 2022, graciously stepped aside, accepting Prime Minister's proposal for India to be the host in 2022 instead of 2021. Clearly, Prime Minister Modi's reform, perform and transform mantra was at the center stage during India's intervention at the G20 summit in Buenos Aires. Prime Minister Modi called for reforms in WTO and other multilateral agencies, a sentiment that was echoed by several leaders and was reflected in the Argentina G20 declaration. Inspiring words indeed by the Prime Minister, and very proud that India will be hosting this summit in 2022. तो भारत इस समिट की मेजबानी करेगा और इस समिट में जो बात हुई 2018 में, वो मेन मुद्दे ये थे: फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर and many more things. To discuss on the takeaways and the declaration of the summit, we have with us today a very distinguished panel. It gives me great pleasure today to introduce Sachin Chaturvedi ji, DGRIS. बहुत स्वागत आपका. धन्यवाद. We are joined with the former ambassador and distinguished fellow at VIF, Ambassador Anil Trigunayat. बहुत स्वागत आपका. We also have with us Ambassador Suresh Reddy, who is Joint Secretary at the MEA. बहुत स्वागत आपका. Thank you. And we are also joined by author and blogger and columnist Dr. Sreeram Chaulia. बहुत स्वागत आपका. Thank you. Thank you for joining us today. तो शुरुआत मैं आपसे करूंगी सचिन जी. If you could take us back to the history of G20 and also tell us about the other alliance summits as well, like G4 and G10. और उसके साथ इस पे आप किस तरह बताना चाहेंगे कि G20 की क्या इम्पोर्टेंस है and how it started from being a finance ministers conference or a forum to becoming an involvement of the heads of state. बिल्कुल ठीक है निधि जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि सरकार ने 2022 में इस सम्मेलन की मेजबानी की बात रखी है। एक थोड़ा इतिहास में जाना अच्छा होगा, और अगर हम देखें तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर सभी शामिल हैं, इन लोगों का 90 के दशक में विकास बड़ी तेज़ी से हुआ और उस विकास के चलते एक ऐसी संभावना वहाँ बनी जहाँ वेस्ट की कई बड़ी पावर्स ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट के चलते प्रॉपर्टी के दाम और बाकी चीज़ों के दाम बड़ी तेज़ी से ऊपर गए। उसके चलते एक ऐसा इकोनॉमिक बबल वहां तैयार हो गया जिसके बस्ट होते ही एक मेजर क्राइसिस खड़ी हो गई। 97-98 में वो जो क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि सारे मुख्य जो हमारे आर्थिक व्यवस्थाएं थी, चाहे अमेरिका की चाहे यूरोप की, उन सब का पैसा वहां अटक गया। इसको कैसे बाहर लाया जाए, इस क्राइसिस से कैसे बाहर आया जाए, ये मुख्य मुद्दा था। तब हमने देखा कि लैरी समर्स ने एक प्रस्ताव हमारे सामने रखा। पॉल मार्टिन और लैरी समर्स के उस प्रस्ताव के आधार पर क्लिंटन, जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने वित्त मंत्रियों की एक बैठक 1999 में बुलाई। जी। इसके बाद ये दिखाई देने लगा
कि भाई सिर्फ डेवलप्ड कंट्री अगर आपस में बैठ के बात कर लेंगे तो मसला जमेगा नहीं। तो उस समय जो G7 था उनको लग रहा था कि बाकी लोगों को भी साथ में लेना चाहिए। इमर्जिंग इकोनॉमीज जिसको कहा गया, इसको यूके ने 2005 में O5 कहा, आउटरीच 5 कहा। लेकिन 2007 में जब हैलीगंडम में G7 की मीटिंग हो रही थी, तब हैलीगंडम प्रोसेस में बाकी कंट्रीज को भी साथ में लिया गया। तो वो G5 जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थे उन लोगों को साथ में लिया गया। बाद में ये देखा गया 2008 में जब ये क्राइसिस दूसरी दिशा में चली गई, अमेरिका के साथ क्राइसिस शुरू हो गया, लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया, और 2009 में तो क्राइसिस बहुत तेजी से हो गई। तो 2008 में ये प्रयास हुआ कि क्यों ना हम इसको हेड ऑफ द स्टेट लेवल पर ले जाएं, इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स को भी साथ में लिया जाए और हेड ऑफ द स्टेट के लेवल पे इसको ऊपर लेके आया जाए। जब ये सम्मेलन 2008 में हुआ पहली बार, तब ये सामने आया कि सिर्फ फाइनेंस की बात करने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। विकास की संभावनाएं क्या हैं और विकास का वित्त से क्या संबंध है, ये सामने निकल के आना चाहिए। तो 2010 में जब साउथ कोरिया ने इसकी मेजबानी करी, तो पहली बार साउथ कोरिया ने और फिर 2011 में कनाडा ने, दोनों ने मिलकर के एक विकास का पिलर लाया। तो आज आप G20 में देखते हैं कि दो ट्रैक चलते हैं, एक फाइनेंस का ट्रैक चलता है, एक डेवलपमेंट का ट्रैक चलता है। ये दोनों ट्रैक 2010 से लगातार G20 में चल रहे हैं। ये थोड़ा एक उसका हिस्टोरिक कंटेक्स्ट है। आज अब आप अगर देखें ब्यूनस आयर्स में क्या हुआ, जैसा कि आपकी क्लिपिंग में आपने दिखाया, प्रधानमंत्री ने विकास की चर्चा करी, भारत उसकी जब मेजबानी करेगा, और उन्होंने काफी प्रधानमंत्री ने बड़े पुरजोर ढंग से जो भारत का अपना विकास का अनुभव पिछले 4 साल में रहा है वो उन्होंने सामने रखा। तो G20 में आज आप देखते हैं कि 19 राष्ट्र हैं और 19 राष्ट्र के साथ में एक EU है। इस तरह से G20 बना है। थैंक यू सो मच। जैसे कि सचिन सर ने बताया about the Prime Minister's pitching in for India's agenda. So I would like to say that it was very much in alignment with his vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, as he was the lead speaker in People First in the conference. So your takeaway from that? You are absolutely right, Nidhi, and what Sachin ji has said, that Prime Minister's pitch and his vision about Sabka Saath, Sabka Vikas, which is very clearly evident in his outreach to the rest of the world, including our neighborhood. That is where it began from. And within India, of course, it is there. Now, the biggest takeaway out of that would be that whatever policy paradigm shifts he has brought about have been all reflected in the G20 communique. In almost every single way, whatever he has said, whether it is digitization, whether it is the black money, whether it is development agenda, sustainable development, energy security, everything, whatever he has been talking about, and all these are extremely important points and the nodal points for the growth and successfully implementing the Sabka Saath, Sabka Vikas. Now, the Prime Minister India is going to be the host in 2022, when we'll be almost there, I think about 20 years into the G20, because we joined, I think, in 2003. And this is something, a biggest, I would say, a success of our foreign policy. And I'm sure we're going to discuss that, but Prime Minister there had very clearly shown the adroit and the deftness of the way the India has arrived and the way he conducts the foreign policy in his interactions with the key leaders of the world, whether it's in the Troika format with the Americans or with the Russians or with the Chinese on the one end or the Japanese on the other, and how nicely we have calibrated our national interest and the global interest in the way. Because this is, I must also say now here that this is also the first time that after the non-aligned movement that India has launched something which is absolutely unique, and that was the International Solar Alliance, and which is going to create a major game changer in the way the world is going to grow and how sustainable development is going to come about. And I think that India has taken lead in many ways, and we are currently leading the change, even in the G20, which is generally has been the OECD-driven format. And even though this time I would have, this was the G20 meeting was held in a very cantankerous environment.
It was more to do with the bilaterals than with the real multilaterals. A lot of optics happening on the side level, yes, absolutely. And the optics and substantive discussions. I mean, Indo-Chinese problems were to some extent addressed there. But what happens when it becomes more about the person or the personality and not about the country? All those things also have been playing out, which have considerably watered down the declaration to some extent. But aapse janna chahungi, Ambassador Reddy, if you could tell us how it was aligned to the Sustainable Development Goals. You know, I'll go back to what Dr. Sachin was mentioning in terms of the historical evolution of the G20. What is interesting is the change in the agenda of the G20 over the years. The meeting of the leaders started in 2008 when we had the global financial crisis, thanks to the subprime mortgage and the collapse of the Lehman Brothers. And later, after that time, the focus for the first 4 years, we also had 2 summits a year. Initial 2 years, we had 2 summits a year, because the challenge was such, the crisis was such, it required a great attention by all the leaders directly on it to find a resolution. But it resulted in a lot of significant changes in the way the international monetary institutions were being managed, in the way the national approach to whole issue of financial architecture was being addressed, etc. And importantly, it gave a sense of confidence again back to the people that the governments are doing what is needed, A, and B, it gave a sense of confidence to the global community that all the governments are coming together to work to address this crisis, because it was a crisis which has spread rapidly across all the borders, number one. And number two, when you look at 2015, 2015 is an important year, not only from India's perspective, but also from almost all developing countries' perspective. And I would say even globally, because we should remember that G20 consists of 19 countries plus the EU. But beyond this, we also have another 150 plus countries around the world, right? Which look up to what G20 is discussing, debating, and the outcomes of the meeting. We had the Paris Climate Change Agreement, number one. And naturally, so that brought the issue of climate change into the agenda, which is an important issue. And equally, another important development was the adoption of the Sustainable Development Goals, the SDG 2030 as we commonly call them. And so, jab uska adoption hua, that happened in 2015, this was reflected immediately in the 2016 summits onwards. But what is interesting is also, if you recall, as you mentioned earlier, the priority for our government is what? Sabka Saath, Sabka Vikas. And that is what essentially sustainable development is all about. And today, that is the theme of G20. Essentially, what India has achieved is to bring it to the forefront of the international debate, the international discussions on how development should be shaped. And this recognition was given to India when Prime Minister was invited to be the lead speaker in this session, focusing on people first. And that has been the policy of this government, which has been putting people first. And A, and B, also when you look at the various initiatives taken by the government, be it Digital India, be it Startup India, or be it in terms of empowering the women. Jindal. The Ayushman Bharat. Ayushman Bharat, very important. All these are also 500 million people benefiting by the scheme. All these are reflected also in the G20 agenda. Yes. You know, when the Honorable Prime Minister, when he speaks of India's experiences with these initiatives and what has been our success story, he is not talking only for India. He is there as a leader representing the 150 odd developing countries around the world. A, and B, he is reflecting the aspirations of the people at large. The people of the emerging market, the people of the developing countries, their aspirations. And he is also sharing the challenges as a leader of one of the biggest developing countries on how do we address those challenges. And so it is a very, very important contribution which is being made by India in the G20 forum, and that is being valued by all the other partner leaders and the countries which are participating in the G20 process, really. Sir, Dr. Sreeram, I'd like to ask you now, 85% of the G20 countries are, contributing towards the world trade, if you take it that way. I mean, 75% to the entire economy of the world. So what, according to you, is the takeaway? Nidhi ji, trade is indeed very central to the whole process of globalization. जो वैश्वीकरण हम कहते हैं, उसमें व्यापार बहुत बड़ा उसका केंद्र है. तो पिछले कई सालों से जब से ये संकट शुरू हुआ 2008 का, we have had this, the threat of protectionism, which is countries imposing barriers to exports of other countries as a kind of emergency measure.
Now this unfortunately has become quite mainstream over the last 10 years. So G20 के माध्यम से जो मेंबर्स हैं उन्होंने कोशिश की है कि कुछ हद तक ये प्रोटेक्शनिज्म को किसी तरह रोका जाए, और पिछले साल तक ये लगातार हर साल जो डिक्लेरेशन होती थी G20 समिट में वो खास उसका जिक्र हुआ करता था, लेकिन अभी थोड़े से उस पर देखिए बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती है कि इस तरह के जिक्र हो। तो इस बार हमने प्रोटेक्शनिज्म जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल ही नहीं किया, और वो एक जैसे एक उदाहरण है कि किस तरह की टेंशन्स फैली हुई है G20 में फिलहाल। तो वैसे तो भारत लीड ले रहा है कई मामलों में, लेकिन जो समन्वय और तालमेल ज़रूरी है वैश्विक ग्लोबल गवर्नेंस जो कहते हैं उसके लिए, वो फिलहाल मिसिंग है। एंड उस पर ज़्यादातर मेरे ख्याल से अब अगर हम कहें कि चिंता की कौन सी विषय हैं, तो ये सबसे बड़ा है कि ट्रेड एक प्रोटेक्शनिज्म हो गया, दूसरा माइग्रेशन और रेफ्यूजीज पॉपुलेशन मूवमेंट्स जो कहते हैं, बड़े ये सब बड़े मुद्दे हैं जो एक देश अकेली नहीं सॉल्व कर सकती, इसीलिए G20 बना है एक तरह से कि हम सब मिलकर इनको हल करें साझा तरीके से। तो ये माइग्रेशन रेफ्यूजीज पर भी इस बार जो डिक्लेरेशन आया उसमें काफ़ी तनाव थे, पीछे जो बैकरूम नेगोशिएशंस होते हैं फाइनल डिक्लेरेशन से पहले, और सहमति नहीं है इस पर भी, क्योंकि कई पश्चिमी देश हैं यूरोप के और उत्तर अमेरिका के जो चाहते हैं कि वो और शरणार्थी नहीं लेना चाहते और अपने दरवाजे बंद करना चाहते हैं। तो एक तरह से देखिए डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, विकासशील और विकसित, इन दोनों के बीच में वैसे तो G20 अनोखी एक इंस्टीट्यूशन है जिनमें दोनों शामिल हैं G7 के मुकाबले, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच अंतर रहता है, क्योंकि वी कम फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आल्सो डिफरेंट हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। तो आप स्मॉल ग्रुप्स देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है G20 में कि कैसे भारत ने, जैसे मान लीजिए टेररिज्म की बात हुई, उस पर भी हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में और इन सब में बहुत बड़ा योगदान दिया G20 में। हमने ज्यादा लीड लिए हैं मोर देन द वेस्टर्न कंट्रीज इन दिस काइंड ऑफ इश्यूज, because these are of greater concern to developing nations. Likewise, financial stability board जो होती है, जो G20 से जुड़ा हुआ है, जो रिस्क देखती है कि कहाँ बैंकों में ज़्यादा जोखिम लिया जा रहा है जिसकी वजह से क्राइसिस बढ़ती है, उसमें भी उसने सर्टिफाई दिया है कि भारत एक ऐसा देश है जो लगातार पिछले 10 सालों में G20 जब से शुरू हुआ है, we have been fulfilling the norms of the financial stability, the risk regulation and capital adequacy ratios, all these things. So in a way we are a star performer. एक तो नरेंद्र मोदी जी की छवि है, वो एक रॉक स्टार है, वो विश्व पे जहाँ पे भी कदम रखते हैं कुछ बोलते हैं, कुछ नया देते हैं। जैसे 11 पॉइंट उन्होंने he had suggested Prime Minister on combating terrorism at the Hamburg summit. इस बार अर्जेंटीना में he gave a 9-point agenda for money laundering and for economic offenders and to bring them back, to bring them to justice through coordinated action. तो नए आइडियाज तो हमेशा ही हम डालते हैं, लेकिन साथ साथ देखिए पॉलिसी अचीवमेंट्स एंड क्रेडिबिलिटी भी एक चीज होती है। कोई यूं ही जाके बोलने से ना लोग कहेंगे 1-2 सालों के बाद बोलेंगे अरे यार ये तो छोड़ रहे हैं ये, लेकिन what we have done under Prime Minister Modi is consistently deliver on and our followed words. It up. All Yes. the G20 norms, all the G20 institutions, all the G20 values, agar if there's one role model who has upheld it, it is not Europeans or Americans or even Japanese for that matter, it's India that has done it. And we're proud to say that, absolutely. And on that note, let's bring to you what the Prime Minister had to say for the agenda of G20 summit at Argentina. अर्जेंटीना G20 समिट की मेजबानी कर रहा है, तो यह हमारे लिए भी खुशी और गर्व की बात है। इस समिट में जिन मुद्दों पर बात होगी, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, आर्थिक भगोड़े अपराधी, उनसे सिर्फ भारत या अर्जेंटीना का ही नहीं, सारे विश्व का हित जुड़ा है। हमारे दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। व्यापार, फार्मा, ऑयल एंड गैस, आईटी और स्पेस, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक दूसरे की क्षमताओं का आपसी फायदा उठा सकते हैं। भारत और अर्जेंटीना का सहयोग जल, थल और नभ हर जगह एक नए साझा और सुनहरे भविष्य की सृष्टि कर सकता है।
Prime Minister Modi reaffirming India's commitment to lead the change. Sachin sir, आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पे, there's so many things like financial task force, fast action task force जो India ने suggest की. How can that bring about change, especially if we talk about economic offenders who are looking at other countries as safe havens, and you know, there has to be a mutual consensus on this, and what better forum than G20 to follow this? Exactly, Nidhi ji. If you see what Prime Minister emphasized in G20 is not something very different from what is being pursued back home, and this is to be extrapolated at a larger level at the global platform like G20. And as your clipping very rightly quoted Prime Minister in terms of our commitment on economic offences, not only in our territory but also their spillovers to other territories. That secrecy is maintained in a lot of places. Exactly, and then the economic advantages are leveraged by countries for their narrow gains, and then you exclude that. One more example here is in terms of India's commitment for, and this is linked with your earlier question that you posed to Dr. Reddy on the whole question of sustainable development goals. India was one of the leaders when issues related to financing for development came in Addis Ababa. So Addis Ababa action agenda, where we had sent our Minister of Finance to articulate Indian position, one point that Prime Minister said, and this was his point of election campaign, and then translating that into action, is in terms of India's strong reservations on outflow of black money, not only from Indian territory, but territories of African countries and all other countries. Right. So on financing for development as part of Addis Ababa action agenda, India very forcefully articulated a global tax regime. And in the previous G20 summit, both in Germany and also in China, Prime Minister Modi raised this question. जो आज उन्होंने आर्थिक भगोड़ों की बात करी है, उसके पहले प्रधानमंत्री दोनों G20 समिट्स में ये बात उठा चुके हैं कि काला धन देश से बाहर ना जाए. ये सिर्फ हमारे देश की जिम्मेवारी नहीं है. आज सारी तंत्र जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से जुड़ा हुआ है. आपको पता नहीं चलता है, बॉर्डर से लोग बैग भर के पैसा लेके नहीं जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो जाता है. हमने कई केसेस में ये बात देख ली. तो ये जब तक सारे देशों की व्यवस्थाएं एक साथ नहीं आएंगी, इसके ऊपर काम करना बड़ा मुश्किल है. इसी का दूसरा संवाद जो प्रधानमंत्री ने सामने रखा वो टेरर फाइनेंसिंग का है, क्योंकि ये ब्लैक मनी जो है ये सिर्फ आर्थिक अपराधों से नहीं निकल रहा है, ये कई दूसरे तंत्र भी पैदा कर रहा है, जिसको हम कश्मीर में और कई जगह पर देख रहे हैं. तो ये बड़ा आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं आपस में मिलकर के काम करें. G20 उसका एक प्लेटफॉर्म है. पिछले 2 सम्मेलनों में प्रधानमंत्री ने बार-बार ब्लैक मनी के बारे में उठाया. भारत एक अकेला ऐसा देश है विकसित नहीं विकासशील देशों में जो कि यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे टैक्स रिजीम बने. इसके लिए जो टास्क फोर्स है उसको भारत पैसा दे रहा है और भारत उसका सपोर्ट कर रहा है. बाकी G20 आगे नहीं आए अभी तक. दूसरा मुद्दा जो महत्वपूर्ण है वो जो आपने उठाया अभी कि क्या भारत ने फोर्सफुली रखा है. अगर आप देखें एमिनेंट पर्सन ग्रुप, इस सम्मेलन में एक एमिनेंट पर्सन ग्रुप बनाया गया, उसकी बात सामने लाके रखी गई. भारत ने समर्थन किया, लेकिन भारत का समर्थन रिजर्व्ड है, क्योंकि हमने ये बात सामने रखी कि किसी भी हालात में मल्टीलैटरलिज्म हमारे लिए सेंट्रल है. उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके नॉर्म्स वो सिर्फ एक IMF नहीं ले सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो IMF की सुप्रीमेसी लाने की बात एमिनेंट पर्सन ग्रुप ने करी है, भारत ने उसका अभी तक कोई जवाब नहीं रखा है सामने, लेकिन भारत ने क्रिप्टो करेंसी को भी नकारा है. और भारत ने बार-बार कहा है कि WTO हो या मल्टीलैटरलिज्म हो, हम उसके समर्थन में खड़े हैं. IMF एक अकेला ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता. G20 के इस सम्मेलन में अर्जेंटीना ने एक होस्ट कंट्री के नाते और जो एमिनेंट पर्सन ग्रुप ने जो अपनी बात सामने रखी है उसमें IMF की सुप्रीमेसी को दर्शाया गया है. भारत ने चाहे वो ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म हो जिसपे हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, या हम चाइना के साथ खड़े हुए जब चाइना ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया, तो भारत ने बार बार कहा है कि स्थानीय निकायों के संचालन के लिए स्थानीय पैसे की आवश्यकता हो.
तो हम लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन में यकीन करते हैं। प्रधानमंत्री ने जो आपने एक छोटी सी एक एग्जांपल रखा जनधन योजना, वो भी उसी का हिस्सा है, जहां प्रधानमंत्री एसडीजीज के लोकलाइजेशन की बात करते हैं, स्थानीय सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो वही मुद्दा हमारे लिए बार बार सामने निकल करके आता है, जिसमें हम कई स्तरों पर बार बार ये कह रहे हैं कि विकास की संभावनाएं स्थानीय स्तर पर ही देखी जाएं, उनके लिए बाहर से रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगी सर, अगर फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो तो उसके लिए भी भारत ने पिच किया है और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सोच से सबको मुरीद कर दिया, जैसा कि हम बार बार यहाँ कह रहे हैं। मगर considering the fact that technology has taken such a immense leap in this century, do you think employment actually world over is a problem and will remain so? Well, before that, I would like to say, just add to what Dr. Sachin has said. The Prime Minister has also mentioned on 2 occasions in different places, one at the United Nations and one in the G20, that what is a terrorist? Who is a terrorist? There is not an agreed definition as of now. And who is an economic offender? Even that definition, that needs to be done in the first place before all the things can be brought together to bring them to book or to repatriate or expatriate them. Now, that is very important, because the problem is that in most of the multilateral institutions, there is a lot of talk. But at the same time, nobody tries to get into the grassroots. That what are the problems actually going to be there? And that is why the people like Nirav Modi and others, they are just hanging around all over the world. Yes. But fortunately for us now, because the Prime Minister, as Dr. Sachin has said about the black money, he is the first one who has started at the G20 that the black money should be flagged and all the countries should be responsible for it. Terror financing is beginning through the black money. That is the most important thing. And India has suffered a great deal and continues to suffer from terrorists, from across the border or from the other countries as well. And therefore, and even employment in terror groups. Everything, because terrorism affects everything, because that brings to naught whatever you are doing. It brings the fear into the minds of the ordinary people also. But as far as your question is concerned, yes, definitely the technologies introduce some kind of disruption in the existing mode of employment and existing mode of education, everything. And it happens, and it has been happening. It's not the first time. When the industrialization happened, certain jobs went away, but then it created many more jobs. In fact, there are studies which have said that with the new introduction of the new technologies like artificial intelligence, robotics and all that, while the efficiency and productivity will increase significantly, it will also create new jobs in the different new sectors, where at the end of the day, it is not the machine which is the master, it is the man who is the master of the machine. And that is what it has to stay that way. And that has been very clearly articulated, how the education will be done, how the people of retraining, Skill India initiatives, for example. I mean, it doesn't have to stay where at the basics. We have to confront the new technologies which are in the AR, VR section, and we have to implement them, and that has to be done across the board. At the same time, there are many advanced countries who have developed these technologies, but they have been refraining from passing it on to the developed world. That is what, whether it is climate change or anywhere, India has stood for this thing. I mean, when we say differentiated responsibility, we mean that somebody else has to take the tab for these kind of things. I mean, they have to provide for the technology. And people have committed, yet not delivered, especially these developed world. And therefore, I feel that what Prime Minister has done is he tries to bridge that gap and very clearly focused on the shortcomings of the approaches that have happened in these so far in these countries. बिल्कुल. We'll continue this conversation, पर यहीं पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी नेशनल न्यू इंडिया संकल्प. सितारों की दुनिया, सुरों की मिठास, फिल्मी सफर का हर एक मोड़, लेजेंड्स की कुछ दिलचस्प बातें, अदाकारी, अंदाज और अदाएं, सिर्फ हमारी जुबानी. तो देखना न भूलिए चित्रहार, बुधवार और शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. वेलकम बैक एंड हम चर्चा कर रहे हैं G20 समिट पे. I'll talk to you now, Ambassador Reddy. Taking the cue from what Ambassador Anil has said about sustainable development and employment, what is your takeaway from India's agenda and push?
Thank you, Nidhi ji. I'll go back 4 steps. First is I'll refer to what he correctly pointed out, that India has been really one of the successful participants, contributors to the G20 process. I think there's something really important and which we should acknowledge, and especially as I said, it was India which actually worked with the other members of G20 to bring the issue of sustainable development to the forefront, and which is finally reflected even in the theme of the summit which just got over. And it is also an important element of the discussion of the agenda of the incoming chair, the Japan, which has taken over the chairmanship from first. So it is also an important element in the Japanese agenda. And so the focus would be maintained and it would continue, number 1. Number 2 is an important point made by Mr. Anil on the availability of technologies to the different countries, especially to the developing countries. And that is what we call democratization of technologies. And that has been a focus area for Honorable Prime Minister also. In all his meetings, in all the forums, he has been reiterating the importance of making the technology available to the developing countries. In a way, it enables them to realize the goals of sustainable development. जब तक आपके पास वो technology available नहीं है, फिर आप कैसे achieve करेंगे? I mean, aspirations, the sustainable development की बात कहाँ से आप आगे जाएंगे? Meaning, today it's all about technology, realistically speaking. And mutual sharing is the forum. Mutual sharing, but the cost of technology is so high that the developing countries are not able to benefit from it. You can even very common example that of medicines, for example, right? A very, very common example is that. But coming back to the point of, on what Dr. Sachin was mentioning about the economic fugitives, I would say something very, very important, because when Prime Minister initiated discussions on that, it was immediately appreciated by many of the members of G20 and beyond. Because it could not be the fact that only India is facing this. I'm sure other countries are also facing economic offenders. Exactly. If you look at Africa, almost all the African countries by and large are resource rich. And so naturally they are also very seriously concerned about the outflow of money illegally. So this got immediate support across the African continent on our position on this economic fugitives and illegal outflow of money. And similarly in the case of Latin America also, if you look at the recent election which have taken place, they have all been based on the anti-corruption platform essentially. So they have also been quite seriously concerned about it, and so they have also actively supported our Prime Minister when he raised the issue of economic fugitives. And as it was correctly pointed out earlier, what India has done is that we have identified the problem and we have also proposed steps on how do we go forward in addressing this problem. That is what was, even you see in the last year in the summit, we gave a 11-point agenda for addressing terrorism and terrorism financing primarily, which resulted in a specific outcome document from the summit. A Hamburg Declaration on Terrorism was issued last year. Last year in the sense of 2017, when Germany was the G20 chair president. And this year, we have proposed a 9-point agenda on how do we go forward in addressing economic fugitives. We have given specific steps as one of the important elements which was correctly pointed out was the definition of economic offence is determined by the national legislation. Okay, आपका हर country का कानून उसी के हिसाब से the definition is given as to what is economic offence primarily. And so the starting point would be how do we arrive at a common definition. And then after arriving at a common definition, how do we go about implementing it? What are the next steps after the common definition? So we have really done a lot of homework on that, and when it was presented to the forum, to the G20 at different levels, everybody appreciated it, and we are continuing to work. We are hoping to continue to give focus in the Japanese presidency also. This will be one of the focus areas for us, and we hope that down the line you will be able to actually show concrete results on this area. And more stringent measures are made and brought about so that these people are brought home to their respective countries. And also another area. And booked for the offence done. Another area which is interesting in the Argentinian presidency, relating it to the question which you asked earlier, was the first time we had a combined meeting of the education ministers, labor ministers and employment ministers. How nice, yes. The reason is that because of the primary challenge today which is confronting our societies is employment generation, the challenge faced by the labor force from the technology disruption which is taking place. Now, आप globally देखिए कि क्या हो रहा है कि in हर country में आप देख रहे हैं the protest is increasing, kind of an anti-globalization sentiment is coming into play, right?
That is because people are concerned about what is happening to them. They are not able to understand the rapid changes in technology, A, and B, they are not able to appreciate the changes, how it will impact them. And third is, how are they going to benefit from it, or how are they going to participate in this technological revolution which is taking place? And so finally, the important point is, what about the skilling of them? We have to upgrade the skills, we have to reskill them, and to do that, you also have to go back to the grassroots, which is the school. You start from the school. And then along with the schooling, along with the foundations of education, then you also have to look at what kind of education in terms of skills, what kind of skill set is required for the new age economy, so to say. And then from the new age economy, we also look at the employment policies. How do we shape the employment policies? And so these are all again areas, if you see, which we have been addressing internally in India. If you look at, say, our own government's initiatives, let's just Skill India, is primarily we have identified this problem, and so we are working on addressing it. For example, in the case of the G20 also, now they are recognizing it, and so now this has become one of the core areas of focus. That is why in the Argentinian presidency also, if you see, the theme is called, one of the focus areas, the theme, it is called future of work. Meaning, how is the workforce going to be impacted in the future because of the technological revolution, A, and B, how are we going to equip them to handle this technological revolution, and C, how do we make it a smooth transition from education to vocation, education to employment. That is the primary area of focus, and this would be a key area of focus in the future also. And that is where India would again be providing a lot of leadership because of our own expertise in this area and in terms of the initiatives which we are taking in this area also. Very rightly. So the conversation started on future areas of employment and how we will equip all the nations worldwide to go ahead in this field, which is very important because any kind of decision only comes about with healthy dialogue and debate. So coming to you, Dr. Chaulia, what do you feel was the widening of agendas, sir has rightly said, was that the right way to go considering the populist movements worldwide happening now? And do you think that there was consensus in the declaration? If we talk of takeaways, India's wish list and what came out? I think, Nidhi ji, indeed the populist challenge to multilateral and globalist processes is quite widespread. And very challenging. Yeah, and you know, it has a democratic basis to it because a lot of people at the grassroots are unhappy with the iniquitous distribution. जो असमानताएं फैली हैं वैश्वीकरण के पिछले 30 सालों के दौरान, उस पर देखिए लोगों का काफ़ी आक्रोश है. कई जगहों पे सरकार तख्ता पलट हो गए, नए सरकार आ गए इसी वजह से. और ये जो नई सरकारें हैं ये मानती हैं कि अब जो है कि अपने देश और अपने जो नैरो इंटरेस्ट है उनको पहले रखें बजाय सभियों के, समाज के, अंतर्राष्ट्रीय समाज के. सो इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल सोसाइटी का जो परिभाषा है वो बदल रहा है. जो अब कुछ कहते हैं कि अब जो है चाहे G20 हो या G20 हो तो भी एक G0 के बराबर है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो मिलजुल कर काम करने में अब ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं. तो इसीलिए मेरे ख्याल से भारत का जो स्टेडी कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म एंड टू लिबरल ग्लोबल वैल्यूज, ये जो हैं ये हमारा है. जो पश्चिम हुआ करती थी, जो गढ़ हुआ करती थी ऑफ दिस लिबरल इंटरनेशनलिज्म, वो अभी डगमगा गया है. तो मैं मानता हूं कि अब एजेंडा एक्सपेंशन की आपने बात की, देखिए हमने फ्री मूवमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सनल, इस पर भी हमने काफ़ी पुश किया है, क्योंकि इस एक तो हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है सर्विसेज, और हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये सब जो है सर्विसेज, ये भारत जो है वो दे सकता है दूसरे देशों को. और हम चाहेंगे कि इस पे कोई लगाम या कोई बाधाएं ना आए. लेकिन उसके बावजूद देखिए जो प्रोटेक्शनिज्म की बात मैंने पहले की, कई जगहों पे ऐसे उन्होंने दीवारें बंद रखी हुई हैं. तो हम चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं एक तरह से तनाव है और हम डिनाई नहीं कर सकते. कई देश ऐसे हैं जो नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें ना अपना खुद की अपनी खुदगर्ज जो अपना पोजीशन है वो दिखा रहे हैं. लेकिन हम कह रहे हैं कि आप उदार एक नीति अपनाइए जिससे कि आप लॉन्ग टर्म से मीडियम टर्म को स्टेबलाइज कर सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी. आज देखिए बादल मंडरा रहे हैं इस पर ग्लोबल इकोनॉमी पे. अभी इस साल का प्रेडिक्शन जो है कोई खास नहीं है. कई एजेंसीज ने कहा है कि IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक जो जितने भी हैं, पश्चिमी हो जापानी हो, सभी ने कहा है कि इस साल जो GDP ग्रोथ है वो कम होने वाली है. और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि
एक नया संकट 2008 की तरह वो भी उत्पन्न हो सकती है अगर जिस तरह डीरेगुलेशन हो रहा है कई देशों में। भारत ने तो जैसे मैंने कहा कि आचार संहिता अच्छे से निभाए हैं, लेकिन कई ऐसे देशों जो बिल्कुल ही उन्होंने अपने बैंकों पे जो लगाम हुआ करती सब निकाल दिए हैं, ये कहते हुए कि अब तो हमें कॉर्पोरेट्स को आज़ादी देनी चाहिए, क्राइसिस खत्म हो गया। लेकिन मेरा मानना है, मेरे ख्याल से भारत ने सही पोजीशन लिया है कि क्राइसिस भले ही खत्म हो जो 2008 का हो, लेकिन उसकी जो कोर जो इश्यूज थे, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी, वो अभी हल नहीं हुई है। और अभी एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप, एक और एमिनेंट, सचिन जी ने एक एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप की बात की, एक और है फाइनेंशियल गवर्नेंस पर। उसने साफ कहा है कि अभी जो है जो रिस्क ऑफ रिकरेंस ऑफ अ ग्लोबल क्राइसिस ये हटा नहीं है और हमें कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। G20 का कोर रोल वही था कि उस पर निगरानी है। एक तो डेवलपमेंट ट्रैक है जैसे सचिन जी ने कहा, दूसरा फाइनेंस वाले ट्रैक में भारत ने मेरे ख्याल से सही रवैया अपनाया है। और साथ में हम बी द चेंज यू वांट टू सी इन द जी, महात्मा गांधी जी का जो स्लोगन था वो हमने वाकई इसमें अपनाया है। इसमें हम दिखा रहे हैं कि देखिए हमारी जो रिपोर्ट कार्ड है, अब जैसे जितने भी मल्टीलेटरल बॉडीज होती हैं उनमें कई देशों को अपना जो रिकॉर्ड है 1 साल में हमने क्या किया, 2 साल में हमने कितना अचीव किया, इसको हमें पेश करना होता है। तो इसमें हमने देखिए चाहे UN हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे G20 हो, जितने भी अभी ग्रुपिंग्स है जिसमें हमारा किरदार है, उन सभी में हम दिखा रहे हैं कि वी आर नाउ इम्प्लीमेंटिंग एंड वॉकिंग द टॉक। तो ये बड़ा एक देखिए क्रेडिबिलिटी का सवाल है। दूसरा मैं कहूँगा एक्सपेंशन, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आ गई हैं। अब जैसे US चाइना के दरमियान जो बहुत बड़ी टक्कर है अभी ट्रेड के ऊपर, और आर्थिक एक युद्ध माना जा रहा है जो ट्रंप ने छेड़ा हुआ है विद शी जिनपिंग, इन मामलों को भी लोग समझते हैं कि G20 के जरिए कुछ हद तक उनको सॉफ्टन किया जा सकता है। क्योंकि देखिए जब पूरी समाज बैठी है, 20 लोग बैठे हैं जो पूरी विश्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप आपस में लड़ाई करके मजा नहीं किरकिरा कर सकते ना। तो ये बात है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, हमने भारत ने भी एक पॉजिटिव रोल अपनाया फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स, वेयर हम चाहते हैं कि वी डोंट वांट ट्रेड वॉर्स। ट्रेड वॉर्स जो है वो हमें भी नुकसान पहुंचाती है और जो लड़ रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी नुकसानदायक है। तो हम चाहते हैं कि एक तरह से सुलह हो, तो चाहे ट्रेड वॉर हो, चाहे क्लाइमेट चेंज पर भी मेरे ख्याल से भारत का रवैया है कि देखिए पेरिस जो है, पेरिस अकॉर्ड जो है, चाहे अमेरिका उससे निकल भी जाए लेकिन बाकी जो देश हैं वो अभी प्रतिबद्ध हैं उसके लिए, और हम जो टारगेट्स मीट कर रहे हैं। आप देखिए नरेंद्र मोदी सरकार इसीलिए भी मानी जाती है वहां पे G20 में, क्योंकि सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी, अल्टरनेटिव जितने भी हमने कमिटमेंट्स दिए हैं पेरिस में, हम उससे आगे चल रहे हैं। आप अगर रिकॉर्ड देखें, कई ऐसे देश हैं जो पीछे चल रहे हैं, और बचाए अभी कोल के नए फैक्ट्रीज वगैरह भी खोले जा रहे हैं दुनिया भर में, चीन कर रही है। तो लेकिन भारत जो है, हमने ये दिखाया कि वो रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप जो मैंने पहले कहा, तो इन सब नए मिशन क्रीप तो हो ही जाता है, नए एजेंडा आइटम्स आ जाते हैं, लेकिन जो भी आ रहे हैं हम उनको एक कंस्ट्रक्टिव दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया इज इंडीड वॉकिंग द टॉक। एंड यहीं पे हम ले रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यू इंडिया संकल्प, चर्चा जारी रहेगी G20 पे। वेलकम बैक। हम बात करें G20 समिट चर्चा पे। सचिन सर, आपसे जानना चाहूंगी, अगर फाइनेंशियल लिक्विडिटी की बात करें या मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर जो उभर के आई G20 से, तो सिंस यू आर द एक्सपर्ट इन दैट, क्या थी वो छवि? देखिए निधि जी, 2-3 बातें हमें पहले ख्याल में रखना पड़ेंगी। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो G20 से निकल के आया वो मुझे लगता है कि सिर्फ हमें G20 के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। एक जो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव भारत का रहा वो हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, और उस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के कई परिप्रेक्ष्य हमें, कई पहलू हैं जो हमें G20 में दिखाई देते हैं। अगर उदाहरण के लिए मैं आपके सामने रखूं, जैसा आपने लिक्विडिटी की बात करी, किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता लिक्विडिटी की है, क्योंकि आप चाहते हैं कि क्रेडिट मार्केट में अवेलेबल हो, आपकी बैंकिंग संस्थाएं इस ढंग से काम कर रही हों,
और उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऐसा हो कि लोकल मार्केट में आप क्रेडिट अवेलेबल करा पाए। दूसरा जो मुद्दा आपने सामने रखा, जिसका एम्बेसडर अनिल ने फर्दर इलेबोरेशन किया, सबका साथ सबका विकास। तो अगर आप इस सिद्धांत को अगर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उनका कार्यक्रम कैसा हो, उनका कार्यकाल कैसा हो, जिसके चलते आप क्रेडिट एक्सपेंशन ग्लोबल लेवल पे देख सकें। अगर आप आंकड़े उठा करके देखें तो 2008 की क्राइसिस के बाद और 2016 में ग्लोबल क्रेडिट एक्सपेंशन 24% श्रिंक कर गया जी। उस श्रिंक होने के दौरान भी भारत का आर्थिक प्रगति लगातार चली है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये आप पिछले कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं। 2014 से और तेजी से हमने विकास क्रम को देखा है। इसके चलते कौन सी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें हम इस तरह के परिणाम सामने लेके आ सकते हैं? तो भारत के अपनी आर्थिक प्रगति, भारत का अपना आर्थिक संबंध उन राष्ट्रों से जहां पे कि क्रेडिट का क्राइसिस है, जैसे प्रधानमंत्री ने और सारे हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सभी ने अफ्रीका की यात्रा करी। तो भारत का फोकस जो यूरोसेंट्रिसिटी या वेस्ट फोबिक था, उससे देश को बाहर निकाल के लाना और देश को फिर अफ्रीका या लैटिन अमेरिका की तरफ प्रेरित करना। अब आप देखिए पिछले 4 सालों में कोई भी देश ऐसा बचा नहीं है अफ्रीका के अंदर 54 देशों में जहां हमारे शीर्षस्थ नेताओं की यात्रा नहीं हुई। बिल्कुल, सारे सारे देश हमने कवर करे, कोई देश छूटा नहीं। और विदेश मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री कार्यालय ने मिलकर के एक ऐसा आयोजन रखा जिसमें कि अफ्रीकन देशों में आज आप देखिए 24% हमारा ट्रेड एक्सपेंशन हुआ है। अगर आप उसको नॉमिनल टर्म्स में देखें पिछले 4 सालों में तो वो 54%। ये है कूटनीति और ये है टेक अवे। ये हमारा संदर्भ होना चाहिए जब हम G20 की बात करते हैं। लेकिन भारत G20 में भी रीच आउट टू अफ्रीका की बात करता है। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में वहां साफ कहा कि हम अर्जेंटीना और जर्मनी द्वारा शुरू की गई इस पहल का, जिसमें अफ्रीका के साथ संबंध हो, का समर्थन बिल्कुल करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, कुछ क्लाइमेट पे भी बात हुई है, मगर इंटरेस्टिंगली जिन देशों ने बात की वो सबसे ज्यादा एमिटर्स हैं। इफ यू लुक एट यू नो गोइंग अगेंस्ट क्लाइमेट पॉलिसीज, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ये तो आज से नहीं है, क्लाइमेट चेंज की जब से डिस्कशन चली है या प्रॉब्लम आई है, तो सबसे बड़े एमिटर्स जो हैं वही दूसरे कंट्रीज को डेवलप रखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ज्ञान देते हैं, और वो कभी अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते चाहते हैं। और आप ये देख रही हैं कि सबसे बड़ा एग्जांपल जो है कि ये इवन इन द G20 कम्युनिके में जो आया, तो उसमें सारे कंट्रीज़ ने, जो भी 19 कंट्रीज़ ने और EU ने एग्री किया कि हम क्लाइमेट चेंज पेरिस एग्रीमेंट को समर्थन देंगे, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसके नीचे ही एकदम लिखा हुआ है कि अमेरिका एक्सप्रेस्ड USA दैट दे विल बी विड्रॉइंग फ्रॉम दिस क्लाइमेट। नाउ द बिगेस्ट कंट्री कौन है इस दुनिया में जो इस तरह करता है, जिसके पास टेक्नोलॉजीज भी हैं, जिसके पास सब कुछ है? अगर वही मुल्क किसी और वजह से, तो आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का है। क्लाइमेट ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप उसको लोकलाइज कर दें। Climate internationally affects, and we have only one planet and one chance to save the earth. So it affects everyone. Yes. सर, आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पे जय की बात अगर हम करें तो प्रधानमंत्री ने जापान एंड अमेरिका एंड इंडिया को एक एक्रोनिम दिया जय करके, and he had a meeting on the sidelines of that. So आपकी उस पे कुछ राय है? You know, it was naturally a very, very important meeting, but before I come to that, you see, we are talking of Africa and also about India's success in the G20. You know, I'd like to point out 2 other areas also where India has been taking the lead. One area is in terms of the sharing our concerns over the volatility in the international oil prices. Yes, yes. You know, the crude oil. Prime Minister has been reiterating the necessity for stability in the energy market and highlighting the impact it has on, especially on the emerging economies. And this is again in the context of, as you said, the availability of, you know, liquidity. The second area where where India has also taken the lead is in terms of on the food security. If you look, that was another area of discussion in the G20.
One of the which is main areas. One in of the fact. main areas. It is called sustainable food development, I mean availability. It's gone beyond food security, realistically speaking, because the traditional understanding of food security is that to ensure that there's sufficient quantity of food available to the people of a country, broadly to meet their basic requirements. But today the question is agriculture itself has to become more sustainable, because it has become directly linked to climate change also, the impact of climate change. And so the concept of food security is also proportionately transforming into something called sustainable, agriculture practices, so that in the food security is addressed, but in a sustainable manner, and not for a temporary purpose, that in a way that you're addressing a food security, but in a way where your economy, your long-term impact on the economy or the long-term impact on your land or water resources or etc. is much more damaging. So that is another area on which we have again brought to the on which we have been working closely with our partners in the G20. This was again a very successful summit from India's perspective. I mean, I'm coming to your question. Here, if you look at it, the Prime Minister really had a very busy schedule. He met he met all the leaders both in the hall, in the lounge, etc. But importantly, he also had bilateral meetings with almost all the leaders also, where very, very substantive issues were discussed. The Prime Minister, he had of course the meeting with with President Trump and Prime Minister Abe. We had that, and then we also had the meetings were preceded early in the morning by the BRICS meeting also. The meeting of the BRICS leaders also had a meeting. The BRICS summit also took place before और the यहीं पे G20 हम summit. मैं रोकती हूँ सर आपको यहाँ पे, और यहीं पे हम दिखाते हैं आपको प्रधानमंत्री ने क्या कहा जय के बारे में इन G20. ये एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित अमेरिका, जापान और भारत तीनों मिलकर के विश्व में शांति, समृद्धि और स्थिरता के संबंध में हम मिलकर के क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि दोनों देश हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं, दोनों मेरे अच्छे मित्र रहे। इन तीनों के साथ हमारा मिलकर के काम करना अपने आप में एक सुहाना अवसर है। और ये भी खुशी की बात है, अगर मैं इसको एक अलग एक्रोनॉमी में बोलूं तो जापान, अमेरिका, इंडिया, JAI, इसका भारत के अंदर मतलब होता है जय। जय का मतलब होता है सक्सेस। तो एक प्रकार से ये JAI ये सक्सेस का मैसेज देकर के आज हम एक शुभ शुरुआत कर रहे हैं, और ये हमारी व्यवस्था मैं मानता हूं कि विश्व शांति के लिए, विश्व समृद्धि के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। वेलकम बैक। हम देख रहे थे एक छोटी सी क्लिपिंग जय के बारे में एट द साइडलाइंस ऑफ द G20 समिट। सर नाउ चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे about your biggest takeaways from G20 and what you expect it to become from India's point of view in the years to come, especially if we look at 2022? I think India has succeeded in terms of translating what India has been talking about. So we have internalized the idea of sustainable development goals. We are committed in terms of not only our own country's development, but of everyone. So we are trying to create a global stage where everyone is concerned about the other partner. So it's not about competition, but about cooperation. When India hosts 2022, I would see how we are moving forward with everyone together, both in terms of financial and economic integration, but also providing sustenance of societies. Thank you so much, sir. आपसे जानना चाहूंगी, you have 30 seconds, your biggest takeaway from the G20 2018 summit and how you would like it to roll out in future. Well, what I see now is, apart from what we all discussed, almost everything threadbare, I see that the G20 comprises all our major partners. We have BRICS there, in which all the RIC, JAI now the new one, and we also have the other countries who have been our close partners,
And the one thing that Ambassador Reddy mentioned before, that in his meeting with the Saudi Crown Prince, he mentioned about the volatility of oil prices, and later on after the meeting, when the OPEC meeting was held, the Saudi Crown Prince mentioned that the Prime Minister Modi had spoken to me, and that is why we have taken the decision to continue with the production. Since India gets 80% of our oil from there, Saudi Arabia, yes. बहुत बढ़िया कूटनीति थी ये with Prince Salman. आप क्या कहना चाहेंगे सर? Thank you. 2018 has been really remarkable year for India. It started with all the 10 leaders from Southeast Asian countries being here as our guest of honor for the Republic Day. It was a very historic occasion. The first time in Indian history or first time in the regional history where we have all the 10 leaders standing the same platform along with our leader and as our guest of honor for the Republic Day. It was a matter of pride for India also, and the people of India are very proud to have them in our soil as our guests. And we are also ending the year with having the announcement being made of India hosting the G20 summit. Yes. This really shows the success of our foreign policy during the year 2018. Thank you so much. And आपसे जानना चाहूँगी 30 seconds, Dr. Chaulia. Nidhi ji, the G20 was created as a steering committee for the global economy to pull it out of crisis. To some extent, it can claim success. But more important than that, I think from an Indian point of view, we have been like the pivot of the steering committee. In many ways, a kind of like a force behind the scenes that has stood for all the main principles and has created new mechanisms and have participated full gusto. We have shown we are responsible stakeholders in the international system, and if at all there is a future for a rules-based international order, then I think India is one of the countries that can claim, you know, with veracity that we are upholding it in word and in deed, and through our constructive contributions in the G20 process, because without our presence, without जो भारत ने जो किरदार निभाया है वो मेरे ख्याल से इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि अगर हम ना ये करते तो देखिए और कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें वो ग्रेविटास है, जो एक डेमोक्रेसी हो, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकतंत्र, और जो साथ साथ ग्रोथ भी कर रहा है एंड विद एन इंक्लूसिव फॉर्मूला. तो एक उदाहरण की मिसाल के तौर पर हमने G20 को खड़ा और यहीं पे मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ for this very, very interesting conversation on G20. Thank you so much for joining us today. Namaste. Thank you. And to all our viewers, we look forward indeed to 2022, where India will be the host and will welcome all the heads of state for the G20 summit and lead the way for the whole world. And incidentally, the tagline for 2022 is New India. And this is New India Sankalp. Many thanks for watching. Namaskar.